Hi everyone, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the second lecture of the chapter Alcohols, Phenols and Ethers in Chemistry of Class 12. So let me just give you a quick recap of what we did in the last lecture. So we started off by discussing that what are actually alcohols, phenols and ethers in their compounds, in their structure. And then we came to the classification of alcohols and we discussed that they are divided into different types based on the number of hydroxyl groups which are present in the compound. That is monohydric, dihydric, trihydric and polyhydric alcohols. We also discussed certain examples of these kinds of alcohols. Then monohydric alcohols are further classified based on the hybridization of the carbon atom. So there are two types based on the hybridization, that is sp3 carbon and the another one is the sp2 carbon. Now sp3 carbon is further classified into the primary alcohols, the secondary alcohols, the tertiary alcohols based on the number of carbon atoms to which the alpha carbon is attached. Okay, we discussed about the alpha carbon, beta carbon and gamma carbon. Okay, so अल्फा कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है या फिर कितने ग्रुप से अटैच्ड है that we can tell by seeing the structure of that compound, and then it will be called as 1 degree, 2 degree or 3 degree carbon. Then we also discussed about the structure of allylic alcohols and benzylic alcohols, which also come under the sp3 category. Then talking about the sp2 hybridized carbon atom which is attached to the OH group. There are two types, that is vinylic and arylic alcohols. Obviously, arylic alcohol is the phenol alcohol, like phenol, that is a different category. We will study it as a completely different category because it has different properties and different manufacturing or preparation ways. Similarly, ethers, they are also classified into two categories, that is simple or symmetrical ethers. If the alkyl or the aryl groups which are attached to the middle oxygen atom are same. I mean ethers, I told you that they are RO R dash. Okay, so if R and R dash are same groups, then the ether will be called as simple. And if R and R dash are not same, they are different groups, then they will be known as mixed or unsymmetrical ethers. Now we were discussing, after that we came to nomenclature of alcohols, and after discussing some common rules about the common name and the IUPAC name. So now today we will discuss certain examples related to those rules, and this way you will also be able to remember or memorize these rules. So let's start with the examples. Let's start with the simplest group, simplest alcohol, that is CH3OH. Okay. Okay, so I'm going to write the common name first and then the IUPAC name. Okay. So here I'll write the common name and then I'll write the IUPAC name. So this is the simplest alcohol. So common name says, the rule says that first we need to write the alkyl group, ठीक है, जिससे OH attached है. The alkyl group to which the OH is attached, we will first write that and then we will write alcohol. ठीक है, यहाँ पे alkyl group कौन सा है, that is methyl, क्योंकि CH3 is methyl. ठीक है, so the common name will become, according to this rule, common name becomes methyl alcohol. Okay, and IUPAC name says, IUPAC convention says that first we will write the alkane name. I mean, there's a difference, right? Alkane is methane and alkyl group is methyl. ठीक है, so IUPAC में we need to use the alkane name. So we will use the alkane name and replace the E of the alkane. In the last E, it comes in the last, right? So we will replace that E with all. ठीक है, so in this case, the name becomes, we will write it as methane and then जो E आता है लास्ट में उसे all से replace कर देंगे, so it will be methanol. Simple.
Now another example is, ठीक है, दिस इज सिंपल। जैसे ऊपर वाला किया था, क्या यहाँ पे मिथाइल था, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, सो द ग्रुप विल बी प्रोपेन एंड द alkyl group will be propyl. तो we will use propyl alcohol. But because there are chances कि OH can be attached to either one carbon or two carbon, क्योंकि इसमें there are 3 carbons, right? So there are two possibilities. Either OH will be attached to the first carbon or to the middle carbon, the second one. ठीक है? That is why to remove the confusion in the common names, we generally use the prefixes like N if the chain is normal. I mean, if the chain is a straight chain compound, and for the first carbon we are using N as a prefix, मतलब normal. ठीक है, normal के लिए N use कर रहे हैं. ठीक है, if the compound is attached to the second carbon, ठीक है, so we use the prefix iso or sec. अभी I'll tell you when like what are the cases when we use iso or when we use sec. I'll tell you. If it is attached to the tertiary carbon, then we use the prefix tert. ठीक है, so when we'll do the examples, then it will be more clear. So I'm just giving you some introduction. So coming back to the example, here the OH is attached to the 1 degree carbon. ठीक है, so we are going to write it as, and the chain is straight. So यहाँ पे लिखेंगे N propyl alcohol. ठीक है, common name में IUPAC names में there is not such there is no any such convention related to iso second tert. In IUPAC convention, we simply use the locant number, that is the position to which that the position of the carbon, the number of the carbon to which functional group is attached. ठीक है, और the substituent is attached. तो यहाँ पे we will write it as, क्योंकि alkane क्या है, प्रोपेन, और whenever in the case of IUPAC we number the chain, the number the longest chain as a principal chain. ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 में OH लगा हुआ है, so that is why we will write it as propane 1 all. ठीक है, now another example, CH3, CH, CH3, and now OH is attached to the second carbon. ठीक है, तो this group I told you before also that this group, ठीक है, and whenever a substituent is attached over here, ये जो पूरा ग्रुप होता है, this is known as isopropyl. वाई, क्योंकि प्रोपाइल तो नॉर्मल है, मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन are there, so we are using the word propyl because because the substituent is attached to the second position. Therefore we are using the word iso here. ठीक है, सेकेंडरी कार्बन पे लगा हुआ है, तो we will use isopropyl. It will be isopropyl alcohol. And for the case of IUPAC, it is propane 2 all, because when we will number this, we will number this as 1, 2 and 3. ठीक है, तो सेकेंड वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है. Now coming to more complex structures, CH3, CH2, 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 OH. So again OH is attached to the first carbon. ठीक है, और जो and the carbon chain contains four carbon atoms. So it will be N butyl alcohol. ठीक. Now coming to the IUPAC, it will be, because this is a butane 1, because it is attached to the first carbon, butane 1 all. Now coming to the isomers of butane, there are 2 more cases that can be there.
देखो प्रोपेन के केस में देयर वर ओनली टू पॉसिबल केसेस, आइदर द OH कैन गेट अटैच्ड टू आइदर कार्बन नंबर 1 or carbon number 2. But in this case, in the case of butane, we have three cases. There can be three choices for OH to get attached to either carbon number 1, 2, 3. ठीक है, एंड अब 4 पे अटैच होगा तो वो फिर से 1 बोल देंगे. ठीक है. Now there is one more. Okay, first let's do this. So what will this be? Again, I told you that whenever there is the 2-degree carbon atom, whenever the group or the substituent is attached to the 2-degree carbon atom, we are going to use the word iso there. ठीक है. तो जैसे हमने प्रोपेन के लिए यूज किया था, similarly we will use butyl. Yeah, because there are more chances. I mean, in the case of butane, there are more number of isomers which are possible. So therefore, in this case, in the case of butane, when the OH is attached to the secondary carbon, okay, secondary carbon, why? Because the number 2 carbon is attached to 2 more carbon atoms. So in the case of butane, we use the prefix sec. So this is for the secondary, okay, the secondary butyl alcohol, and the IUPAC becomes butane 2 all. Okay, now coming to the another important isomer. See, this is also an isomer of butane. Okay, because here also we have 4 carbon atom, but it is just the arrangement of the methyl group and the alcoholic group. The methyl group and the hydroxy group arrangement is different. That is why it becomes an isomer. Okay. So see, what was different was in the upper case, in the previous case, the OH group was attached to the secondary carbon. So that is why we were using sec butyl. Here in this case, this whole group, because OH is attached to the 1-degree carbon atom. Okay. But the CH3 is attached. I mean, one branch of CH3 or you can say a methyl group is emerging out. Okay. So ऐसे case में we name it as isobutyl. Isobutyl alcohol. And for the IUPAC case, you don't have to remember any such things. You can simply say that this is a 3-carbon chain, and at the second number carbon, a methyl group is attached, and at the first carbon, an alcoholic group is attached. So seeing the locants, we can simply write 2-methyl propane 1 all. See, in this case, there are 2 substituents. One is the methyl group and the other is the hydroxy group. Now, when there are more than one substituent, so we need to see the preference order. The preference order, matlab the which one is more important. Okay. So in the list of chemistry, in the list of these compounds, the hydroxy group is given higher preference. That is why we consider the hydroxy group as to be the principal functional group and methyl as the substituent. Now another isomer of butane is now in this case you can see that OH is attached to the 3-degree tertiary carbon atom or the 3-degree carbon atom. That is why we are going to use the word tert butyl alcohol. And similarly, the IUPAC name will be 2-methyl propane 2 all. Okay. See, you don't have to get confused between all these names. The thing is that you have to remember is that in common names, you are going to use certain prefixes. Okay, according to the degree of the carbon atom to which the OH group is attached. ठीक है. तो अगर वो 1 डिग्री से लगा हुआ है, देन हम सिंपली N भी बोलेंगे, और मतलब N इन केस जब स्ट्रेट चेन है. ठीक है, देयर इज नो ब्रांचिंग. ठीक है, when it is attached to the second degree carbon atom, then we can use sec.
When it is attached to the third degree carbon atom, then we will use the prefix tert. And but in the case of isopropyl, see, यहाँ पे difference है, because in this example I'm talking about, the OH is attached to the 2 degree carbon, but we are not using the word sec because 3 degree carbon atom is not there. ठीक है, यहाँ पे तो बस 1 degree और 2 degree carbon atom ही है. ठीक है, तो हम इस ग्रुप को ही आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोल देते हैं. ठीक है, so in this case you'll have to remember that there is a difference and in the nomenclature convention. Okay, so that is why everybody now prefers IUPAC convention, because there can be certain confusions in the common names because of these other prefixes and all. So I also prefer IUPAC because you don't have to remember anything regarding these prefixes. You just have to see the longest chain and apply the substituents. That's it. These were all the monohydric compounds. Okay. Now we will talk about the dihydric compounds, dihydric alcohols. Okay. Two OH groups are attached, so this will be a dihydric alcohol. Its common name will be ethylene glycol. Obviously, this is not a common name given by a rule. No, I mean, no rule has been applied over here. It's just a name which is given to this particular compound. So you have to just learn it. And there is no particular rule that you should apply here. But IUPAC has given a rule, and that says ethane 1,2 diol. ठीक है, पहले हमने क्या लिखा, एल्केन लिखा. ठीक है, एल्केन इज ईथेन बिकॉज देयर आर 2 कार्बन एटम्स. ठीक है, एंड उनका जो OH ग्रुप लगा हुआ है उसका पोजीशन क्या है, 1 और 2. ठीक है, तो 1,2 डायोल. नाउ इन द केस ऑफ ट्राईहाइड्रिक, here 1H would be there. ठीक है, its common name is glycerol. ठीक है, तो this is also a very commonly used compound with a lot of applications. So you should remember this name. Maybe in the exams the questions can be asked directly with the name. ठीक है, they can ask that use glycerol to prepare something. ठीक है, so they can use this name in the questions. So you must be aware that ethylene glycol and glycerol, what are their structures. Then the IUPAC name is simple, propane 1, 2, 3 triol, because there are 3 OH groups. Now talking about the cyclic alcohols. See this. Now ऐसे देख के तो लगेगा अचानक से कि this is phenol, but no, because this is not a benzene ring. ठीक है, so just pay attention over here that this is not a benzene ring because there are not double bonds present. तो इसका कोई common name नहीं है, but yes, you can say that it is cyclohexanol. Why? Because this is cyclohexane and उसमें एक OH लगा हुआ है, so it is cyclohexanol. Similarly, if you take another cyclic compound and add a constituent here, तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, नेम करेंगे. ठीक है, because OH is the principal functional group. ये वाला carbon atom is 1 and ये वाला carbon atom is 2. That is why it is 2-methyl cyclopentanol. ठीक है, cyclopentanol. Fine. So these were certain examples for the nomenclature of alcohols. Now we will start a nomenclature of phenols. So there is not much to understand in the case of phenols, because see, the simplest hydroxy derivative of benzene is phenol. I mean, phenol itself is simple compound OH which is attached to a benzene ring. Okay. Now what else can be there? I mean, in the case of benzene ring, there can be some substituents attached to the different positions of that benzene ring, either to the first, second, third.
ठीक है, सो डिफरेंट पोजिशन पे डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, दैट कैन बी अ डिफरेंस। ठीक है, सो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, you only have certain one type of compounds. So suppose this is the compound. ठीक है, so in the common name, okay, I'll tell you that whenever there is a di substitution मतलब multiple, जब दो सिर्फ दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं बेंजीन रिंग में, ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग है, ओवरऑल बता रही हूँ, ये बेंजीन रिंग है, एंड इसमें इस रिंग में कहीं पे भी दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो व्हाट वी डू इज जो मेन सब्स्टिट्यूएंट होता है या फिर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, that carbon is taken to be one first carbon number one, and according to that we will uh, number the other carbon atoms, ठीक है, so if those two substituents they are at 1 comma 2, the common name will include the prefix ortho. If those substituents they are at the position 1 comma 3, then it will be meta. If they are at the position 1 comma 4, then the prefix used will be para. ठीक है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि जब 5 फिफ्थ कार्बन पे लगा होगा, सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, तो अगर एक चीज यहाँ पे लगी हुई है फर्स्ट पे और एक चीज 5 पे लगी हुई है, ठीक है, तो वो चीज हम जब नंबरिंग करेंगे तो वील चूज दिस वे ऑफ नंबरिंग, ठीक है, तो 1 ये होगा, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3, ठीक है, इस वजह से सिर्फ 3 ही केसेस पॉसिबल है, एंड दोज आर दीज, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा फॉर द केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूशन ऑन द बेंजीन रिंग। ठीक है, नाउ सो दिस इज द कॉमन नेम एंड दिस इज द IUPAC नेम। ठीक है, नाउ कॉमन नेम में ये जो कंपाउंड है, व्हेन द बेंजीन रिंग हैज वन CH3 ग्रुप एंड वन OH ग्रुप, then that compound is known as cresol. I'm writing the name CRESOL, cresol, and because इनका जो सब्स्टिट्यूशन है वो 1,2 पोजीशन पे है, we will use the prefix O। पूरा नहीं लिखते हैं, मैंने बस नाम के लिए बताया कि ऑर्थो, मेटा और पैरा बोलते हैं, बट द we only use the first letter, that is O, so this will be ocresol for the case of common name। and IUPAC में simple है, we simply take the principal compound as phenol and we add the position CH3 at the second number carbon, and so it will become 2-methyl phenol, because OH group, I told you that OH group has a higher preference, 2-methyl phenol। ठीक, सिमिलरली अगर डाई सब्स्टिट्यूशन का केस है तो this can be at this position also, again we will use only the first letter, it will be M cresol and it will be 3-methyl phenol। ठीक है, the other case will be when it is attached at the fourth position, this is OH। ठीक है, so it will be paracresol, P cresol, and here it will be 4-methyl phenol। ठीक है, ये तो केस हो गया जब व्हेन द टू सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर अटैच्ड ऑन द बेंजीन रिंग दे आर डिफरेंट। ठीक है, डिपेंडिंग कि एक तो OH होगा और एक CH3 होगा, तो वो नाम इट कैन वेरी। ठीक है, सो दिस थिंग यू विल हैव टू रिमेम्बर कि इन दोनों को, इसको क्रिसॉल बोलते हैं व्हेन CH3 एंड OH आर द सब्स्टिट्यूएंट्स। नाउ इफ वी आर टेकिंग द डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, डाइहाइड्रिक फिनॉल, मतलब जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो दोनों ही हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन वी हैव टू हाइड्रोक्सी ग्रुप्स ऑन द बेंजीन रिंग। ठीक है, और दोनों जो है वो ऐसे हैं, टू हाइड्रोक्सी है, सो व्हाट विल बी द नेम, देन वी विल कंसीडर इट एज अ बेंजीन रिंग एंड टू ऑक्सीजन एट टू OH ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। जैसे हम अल्कोहल के केस में डाई ऑल लगाते थे, फॉर द केस ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, वी विल यूज बेंजीन 1,2 diol, and the common name of this compound is catechol। Obviously you don't need to remember such names,
but I'm just giving it for the sake of information. These common names, because they don't follow any rules, so you don't need to remember them. They are not asked that way. Here the common name is resorcinol, and IUPAC convention says write the alkane, which is benzene over here, write the locants, the position, and then diol. ठीक. Similarly यहाँ पे if it would be para, the name here is hydroquinone. Hydro QUINONE, hydroquinone, और quinol भी बोलते हैं, but this one is more used. And IUPAC says benzene 1,4 diol. ठीक. So these are only the certain variants that you need to understand, and obviously a methyl group can replace, any other group can replace methyl, and then the name would be something different, but you need to understand these. Now we come to the nomenclature of the ethers. Okay, so coming to ethers, for the simple compounds, its nomenclature is simple, but if the compound is complex, then you need to understand many things. Okay, so the common names, they are derived from the names of alkyl and the aryl groups, which are written on the separate words, which are written as separate words in the alphabetical order, and then you will add the word ether. ठीक है, सो आई टोल्ड यू ईथर्स क्या होते हैं, लाइक उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो कौन से फॉर्मेट का होता है, RO R प्राइम. ठीक है, ये होता है व्हेन R एंड R प्राइम दे आर द एल्काइल ग्रुप्स. ठीक है, एल्काइल और एराइल. सो यू सिंपली हैव टू राइट द दीज ग्रुप्स, मतलब R का नाम लिखना है, R प्राइम का नाम लिखना है एज एल्काइल ग्रुप्स, एंड देन ऐड द वर्ड ईथर. ठीक है, और क्योंकि R और R प्राइम अगर डिफरेंट है तो उनके जो नाम, उनके जो एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे. एंड देन यू विल फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. पहला कौन लिखेंगे, आर लिखेंगे कि आर प्राइम लिखेंगे, सो दैट विल यू विल फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर दैट. ठीक. नाउ इफ आर एंड आर प्राइम दे आर सेम, ठीक है, देन यू डोंट हैव टू राइट देम अगेन एंड अगेन. जैसे इथाइल इथाइल ईथर ऐसा नहीं लिखते हैं, वी सिंपली यूज द प्रीफिक्स डाई. ठीक है, डाई इथाइल ईथर. अगर सेम है तो डाई यूज करेंगे, DI. ठीक है. नाउ कमिंग टू द IUPAC नेम. IUPAC name is written considering the hydrogen atom of that compound to be replaced by the alkoxy or the araloxy group. I told you what is alkoxy group. जैसे हाइड्रोक्सी होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में I told you this, कि जैसे हाइड्रोक्सी OH होता है, वैसे ही एल्कोक्सी सिंपल हाइड्रोजन की जगह पे एल्काइल ग्रुप लगा देना, और एरालॉक्सी इज सिमिलरली OH की जगह पे AR लगा दिया, एराइल ग्रुप लगा दिया. ठीक है, तो यही होता है. तो for the case of IUPAC, we simply consider them to be replaced by R and AR. ठीक है. So out of these, मतलब जो भी R और R प्राइम में से जो the whichever is the larger group, that is considered as a parent hydrocarbon, and for the other one, for the smaller group, we use the word alkoxy. ठीक है, तो alkoxy मतलब, तो ऐसा बोल सकते हैं कि in short we can say that common name कैसे लिखेंगे, R R प्राइम ईथर ऐसे करके. ठीक है, वे दीज आर द एल्काइल ग्रुप्स. और अगर IUPAC लिखना होगा तो व्हाट फॉर्मेट वी विल फॉलो, वी विल यूज OR ग्रुप, मतलब एल्कोक्सी. सो वी कैन राइट इट एज एल्कोक्सी और एरालॉक्सी, एल्कोक्सी एल्केन. ठीक है, ऐसे लिखेंगे, जिसमें कि ये वाला जो एल्केन होगा, दिस इज द प्रिंसिपल एल्केन, और यू कैन से द लार्जर वन, द लार्जर एल्केन, वो एल्केन ही लिखेंगे. और जो दूसरा वाला एल्केन होगा, जो छोटा वाला एल्केन होगा, इसको हम लोग एल्कोक्सी फॉर्मेट में लिखेंगे. अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है, सो वी विल डू सर्टेन एग्जांपल्स, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स जंप इनटू द एग्जांपल ओनली.
starting with the simplest ether, that is CH3OCH3. ठीक है, तो फर्स्ट आई विल राइट डाउन द कॉमन नेम एंड देन आई विल राइट द IUPAC नेम. तो इसमें क्या करना है, कॉमन नेम कैसे करना है, दोनों मिथाइल ग्रुप्स अगर सेम है देन वी विल यूज द प्रीफिक्स डाई, क्योंकि दोनों मिथाइल है तो वी विल यूज हियर डाई मिथाइल और फिर बाद में ईथर. तो इट इज सिंपल डाई मिथाइल ईथर. ठीक है. नाउ इन द IUPAC केस वी विल यूज दिस फॉर्मेट एल्कोक्सी एल्केन. ठीक है, ऐसे याद कर लो. तो यू विल नॉट फॉरगेट दैट वी हैव टू यूज एल्कोक्सी एल्केन. तो बिकॉज यहाँ पे दोनों, इस वाले केस में दोनों ही जो ग्रुप्स हैं वो सेम है, तो दिस वन विल बी इजियर, वी डोंट हैव टू चूज. दिस वन विल बी मिथॉक्सी. पहले एक मीथेन से मिथॉक्सी बनाया और दूसरे को एज इट इज लिख दिया मीथेन. सिंपल. नाउ कमिंग टू अ केस व्हेन बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट. ठीक है, तो इसमें ध्यान देना, दिस इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग. तो इसमें क्या करेंगे, एक हमारे पास इथाइल ग्रुप है और एक है मिथाइल. इसमें क्या चूज करना पड़ेगा, कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, तो कॉमन नेम के लिए वी विल चूज इट बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो पहले क्या आता है, ई आता है इथाइल और मिथाइल में. तो फर्स्ट इज ई एंड देन एम. सो वी विल यूज फर्स्ट इथाइल देन मिथाइल ईथर. ठीक है, तो ये क्या बताता है कि ओ की एक तरफ इथाइल है और दूसरी तरफ मिथाइल है, बस इतना. ठीक है, और बीच में ओ है, ईथर का मतलब यही होता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द IUPAC नेम. अब देखो, अगर दोनों ग्रुप्स आर डिफरेंट, if both the R and R prime they are different, then what you need to do is you need to choose a principal hydrocarbon or the parent hydrocarbon. And what is that? We will choose it. यहाँ पे हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा था, यहाँ पे हम ग्रुप ग्रुप का साइज देखेंगे. आई मीन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर देयर इन दैट ग्रुप. साइज मतलब उसी से डिटरमाइन करते हैं ना. तो जो लार्जर ग्रुप है और द ग्रुप विच हैज मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट विल बी द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो क्या होगा इसमें, इथेन जो है दैट इज विल बी द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. ठीक है, क्योंकि वो बड़ा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले इथेन लिख देंगे. एंड द सेकेंड वन इज मीथेन. तो मीथेन को एज इट इज नहीं लिखेंगे, मिथॉक्सी करके लिखेंगे, मिथॉक्सी इथेन. ठीक है, तो वी कैन, जैसे अब ये नेम है ना, व्हेन यू रीड दिस नेम, तो हम क्या ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास इथेन था जो हमारा प्रिंसिपल कंपाउंड था, दैट वाज C6, सॉरी C2H6. ठीक है, अब क्या किया, वी रिप्लेस्ड वन हाइड्रोजन एटम ऑफ इथेन एंड पुट दी मेथॉक्सी ग्रुप ओवर देयर. तो क्या हो जाएगा C2H5 और एक हाइड्रोजन एटम की जगह पे हमने OCH2 लगा दिया. ठीक है, ऐसे लगा दिया एक हाइड्रोजन की जगह पे. तो दिस इज ओनली द concept over here. That is why we are using this concept. Now another one is CH3 here. O, CH2, CH2, CH3. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी तीनों मतलब दोनों ग्रुप्स आर डिफरेंट. तो इसमें भी चूज करेंगे, एक तरफ है हमारे पास मिथाइल और एक तरफ है प्रोपाइल. तो पहले क्या आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एम. ठीक है, एम आता है कि पी. सो एम कम्स फर्स्ट, सो वी विल यूज फर्स्ट मिथाइल एन प्रोपाइल, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो ग्रुप लगा हुआ है, जो प्रोपाइल ग्रुप है, दैट इज नॉर्मल चेन, दैट इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड. सो इट इज एन प्रोपाइल ईथर. ठीक है. नाउ इन द केस ऑफ IUPAC व्हाट वी विल डू इज we will choose the principal compound. Obviously propane is a larger compound, so that will be the principal one. यहाँ पे क्या लिखेंगे, parent hydrocarbon will be propane और we have methoxy. But because it is attached to the carbon number 1, जैसे हमने यहाँ पे n मेंशन किया ये बताने के लिए कि जो OCH3 ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, ये जो ग्रुप है ना, इट इज कंसीडर्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो ये जो ग्रुप है दैट इज अटैच्ड टू द 1 डिग्री ऑफ द फर्स्ट कार्बन. तो यहाँ पे हमने n यूज किया, वैसे यहाँ पे हम 1 यूज करेंगे. ठीक है, यहाँ पे पोजीशन यूज करेंगे. नाउ
if we are adding an alkyl aryl group, then what we will be, what the name will be, one is methyl and the other is phenyl. ठीक है, we call C6H5 as phenyl. ठीक है, तो पहले M आता है या फिर P आता है? फर्स्ट इज M, so we will use methyl. Methyl, phenyl, ether. Simple. Now again, coming to the IUPAC, we want to know the larger hydrocarbon. So C6H5 has more carbon atoms. It has 6 carbon atoms. So this is the parent hydrocarbon. इस वजह से पहले हम लोग बेंजीन लिख देंगे. एल्कीन क्या है हमारा? बेंजीन. और the smaller one is methane. So it will be methoxybenzene. अच्छा, you don't have to get confused. जैसे एलिफैटिक के केस में मीथेन हमारा एल्केन है और मिथाइल उसी का एल्काइल ग्रुप है. ठीक है. Similarly, in the case of aromatic compound or in the case of benzene, benzene is the alkane. ठीक है, तो अगर नेम ऑफ द एल्केन पूछेंगे तो बेंजीन आ जाएगा, या फिर नेम ऑफ द कंपाउंड पूछेंगे तो बेंजीन आ जाएगा. अगर उसी का एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप पूछेंगे तो उसको फेनाइल बोलते हैं. ठीक है. पीपल माइट गेट कंफ्यूज्ड दैट इसको बेंजाइल क्यों नहीं बोलेंगे. अगर मीथेन को हम मिथाइल बोल रहे हैं तो हम बेंजीन को बेंजाइल क्यों नहीं बोल रहे हैं. ठीक है. दिस माइट बी अ कंफ्यूजन बट यू नीड टू रिमेम्बर दैट दिस इज रॉन्ग. ठीक है. हम इसके ग्रुप को फेनाइल बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप को. ठीक है, फेनाइल. so this is methoxybenzene. Next is C6H5O, and then you have CH2 6CH3. ठीक है. अब इसमें क्या है, एक तरफ हमारे पास फेनाइल है क्योंकि एल्काइल ग्रुप है, फेनाइल. एंड दी अदर वन वी हैव 7 कार्बन एटम्स, मतलब हेप्टेन. तो हेप्टेन का एल्काइल ग्रुप क्या होगा? हेप्टाइल. ठीक है. तो एक तरफ फेनाइल है और एक तरफ हेप्टाइल है. ठीक है, तो H या फिर P. तो फर्स्ट H कम्स फर्स्ट, so that is why we will write it as heptyl, then phenyl, ether. ठीक है. इन दिस केस वी नीड टू चूज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है? बिकॉज C6H5 has 6 कार्बन एटम्स एंड द सेकेंड एंड द अदर वन हैज 7 कार्बन एटम्स. तो अब केस उल्टा हो जाएगा. अब जो हेप्टेन है दैट विल बी द प्रिंसिपल कंपाउंड, क्योंकि उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं. तो यहाँ पे प्रिंसिपल और द पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज हेप्टेन, और फिनाइल की जगह पे क्या हो जाएगा? फिनॉक्सी. क्योंकि वन पे लगा हुआ है तो इट इज 1 फिनॉक्सी हेप्टेन. मतलब ये ऐसा सपोज करो कि ये जो फिनाइल ग्रुप है ये सेकेंड नंबर कार्बन पे भी लगा हो सकता था, या फिर थर्ड नंबर कार्बन पे भी लगा हो सकता था हेप्टेन रिंग, हेप्टेन चेन के. ठीक है. तो इफ दिस वुड हैव बीन अटैच्ड टू द सेकेंड नंबर कार्बन देन द कंपाउंड वुड बी 2 फिनॉक्सी हेप्टेन. ठीक है. इसलिए वी आर राइटिंग इट एज 1. मेंशन करना इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. सो ये जो है दिस इज प्रोपेन. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू अभी जस्ट व्हेन वी वर डिस्कसिंग अल्कोहल्स, आई टोल्ड यू दैट दिस ग्रुप when it is attached, when any functional group or a substituent is attached to the middle carbon of the propane. ठीक है, ये प्रोपेन चेन है ना, इसमें मिडिल कार्बन पे हमारा ग्रुप लगा हुआ है. अब वो ग्रुप कौन सा है? OCH3. ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप. ठीक है, जो यहाँ पे अभी हमने बताया दिस. So this is alkoxy group attached to the second carbon. Now, coming to the common name, क्या क्या लगा हुआ है? O के एक तरफ है मिथाइल और O के दूसरी तरफ है आइसोप्रोपाइल. ठीक है, प्रोपाइल नहीं बोलेंगे क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे अटैचमेंट नहीं है. देखो यहाँ पे इस वाले केस पे देखेंगे, इस वाले पे द थर्ड एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एन प्रोपाइल लिखा था हमने. ठीक है, बिकॉज दिस वॉज अटैच टू द फर्स्ट कार्बन. Similarly, यहाँ पे in this example, this OR group is attached to the second carbon, the secondary carbon. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, ईथर. अच्छा,
वन अदर डाउट दैट माइट कम टू योर माइंड इज कि यहाँ पे एम है और यहाँ पे आई है, तो वाई आर वी इन द केस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर आई शुड बी, आई कम्स फर्स्ट, बट यहाँ पे हम आइसो को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग द अल्फाबेट्स और द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि आइसो हो गया या फिर एन हो गया या फिर टर्ट हो गया, मतलब अगर कुछ और प्रीफिक्सेस हम यूज कर रहे हैं सेक, तो वी डोंट कंसीडर देम एज अ पार्ट ऑफ द नेम, एज अ पार्ट ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, क्योंकि वो बस पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, दीज आर जस्ट द लोकल्स। तो हम यहाँ आई यूज नहीं करते, आई कंसीडर नहीं करते, वी कंसीडर इट एज एम और पी, और उसके हिसाब से नेमिंग करते हैं। ठीक है, सो दिस माइट बी अ कंफ्यूजन। दिस विल बी टू मिथॉक्सी प्रोपेन, जैसे ऊपर वाले केस में वन मिथॉक्सी प्रोपेन था, अभी यहाँ पे टू मिथॉक्सी प्रोपेन। क्यों? क्योंकि हम ये मान रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दैट दिस इज अ प्रोपेन चेन ऑफ थ्री कार्बन एटम्स, दिस इज प्रोपेन, एंड ओ आर मतलब जो मेथॉक्सी ग्रुप है, इस ओ सी एच थ्री ग्रुप को बोलेंगे मिथॉक्सी। ठीक है, तो ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है दैट इज अटैच्ड टू द सेकेंड कार्बन, so it is 2 methoxypropane. ठीक है, we will do some more. So this is C6H5O CH2 CH2 CH CH3 and this also has CH3। ठीक है, तो ये भी एक ब्रांच चेन आइसोमर है। दिख रहा है कि so how many carbon atoms are here? 1 2 3 4 5। Here there are 5 carbon atoms, here there are 6 carbon atoms। ठीक है, now this is phenyl group, C6H5 is phenyl and this one is isopentyl। ठीक है, बिकॉज 5 कार्बन है और एक ब्रांच निकला हुआ है, so this is isopentyl। ठीक है, तो इसमें भी हम कोई भी पहले ले सकते हैं, क्योंकि बिकॉज बोथ बोथ ऑफ देम दे हैव पी इन देम। ठीक है, तो हम कोई भी पहले ले सकते हैं। दिस इज phenyl, दिस इज isopentyl ether। नाउ दिस 6 is more than 5। ठीक है, दिस विल बी आवर पेरेंट हाइड्रोकार्बन, तो हम पहले बेंजीन लिख देंगे, पेरेंट हाइड्रोकार्बन हम पहले लिख देते हैं, तो ये हमारा बेंजीन हो गया। नाउ ये जो आइसो पेंटेन है, we will not write it as iso because in IUPAC we don't write these prefixes, uh, we only write down the number or number of the carbon atom। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये 4 कार्बन का चेन है एंड वन मिथाइल इज देयर प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो चेन है दैट इज ब्यूटेन, राइट, और उसमें थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है बिकॉज दिस इज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, राइट, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप ओ आर, या फिर दिस इज यहाँ पे पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सो द जो चेन शुरू होगी कैसे शुरू होगी, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है, O C6H5। ठीक है, कार्बन नंबर 2 पे ये लगा हुआ है। ठीक है, बट क्योंकि ये ईथर है, हमने पहले अपना पेरेंट हाइड्रोकार्बन लिया, वो क्या है, जो बड़ा वाला कंपाउंड है दैट इज बेंजीन। फिर हमने बोला कि दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पे मिथाइल और ये ब्यूटेन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, और ब्यूटेन की जगह क्या हो जाएगा, ब्यूटॉक्सी, ये ऐसे। ठीक, नाउ कमिंग टू अनदर एग्जांपल, वी हैव CH3O CH2 CH2 OCH3, मतलब देर आर टू ईथर विच आर प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे दो एल्कोक्सी प्रेजेंट है, एक ये मिथॉक्सी ग्रुप है और एक ये मिथॉक्सी ग्रुप है। तो हम क्या बोलेंगे, वी विल कंसीडर दिस C2H4, मतलब ये दो कार्बन एटम्स है ना बीच में, इसका मतलब इथेन है। तो वी विल से दैट टू मिथॉक्सी ग्रुप्स दे आर अटैच्ड टू द कार्बन नंबर 1 एंड द कार्बन नंबर 2 ऑफ इथेन। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम एज सच नहीं है, but yeah, IUPAC has always given us the rules, so 1, 2, क्योंकि दो मिथॉक्सी है इस वजह से डाई मिथॉक्सी इथेन, इथेन इज द चेन, द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, नाउ एक
साइक्लिक कंपाउंड का भी कर लेते हैं. हियर देयर इज अ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट. हियर ऑल्सो देयर इज अ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट. एंड यहाँ पे ईथर वाला ग्रुप प्रेजेंट है. सॉरी, द एल्कोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट. ठीक है, दिस ग्रुप इज नोन एज ओ आर, एल्कोक्सी. नाउ अगेन, कॉमन नेम एज सच नहीं है बिकॉज इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड. बट IUPAC सेज क्या करना है, सबसे पहले हमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन देखना है. जैसे ही ईथर देखो, सबसे पहले यू नीड टू चूज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन फर्स्ट. ठीक है, तो क्या O के एक तरफ क्या लगा हुआ है, C2H5 लगा है. ठीक है, और O की दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा सा कंपाउंड है. दैट मीन्स द पेरेंट हाइड्रोकार्बन ये बड़ा वाला ही होगा. ठीक है, तो पहले बड़े वाले की नेमिंग करते हैं. ठीक है, क्या क्या होगा, दिस इज साइक्लोहेक्सेन क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है. ठीक है, रिमेम्बर दिस इज साइक्लोहेक्सेन. तो साइक्लोहेक्सेन है, और ये कार्बन नंबर 1, तो ऐसे करके नेमिंग करेंगे. तो कार्बन नंबर 1 पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. और क्योंकि 2 वाले पे OC2H5 लिखा है, सो इट विल बी 2 इथॉक्सी. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, और उसके बाद छोटा वाला है C2H5, दैट विल बी इथॉक्सी. बट कौन से पोजीशन पे लगाए, सेकंड पोजीशन पे. फाइन. सो this was all regarding the nomenclature of the ethers also. We have discussed several of the examples. Now I would want to discuss one exercise जो कि कंबाइंड एक्सरसाइज होगी, एंड वी कैन अप्लाई ऑल द रूल्स एट अ स्ट्रेच ओवर देयर. ठीक है, अभी क्या है, हमने एक एक डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर किया. So when we will do an exercise, it will contain all of these compounds, like jumbled compounds, jumbled groups. So there you can apply different kinds of rules. ठीक है, so you will be able to remember this. ठीक है, now coming to the first question of the exercise. It is a complex compound, so you will have to. ठीक है, this is the overall compound. अब what you have to see first in this compound that बाकी सब तो हाइड्रोकार्ब मतलब एल्काइल ग्रुप्स ही हैं. दिस इज अ क्लोरीन एटम और अ क्लोराइड ग्रुप प्रेजेंट हियर, एंड दिस इज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हियर. ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप्स या फिर दो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं. आउट ऑफ दीज विच वन हैज द हायर प्रेफरेंस. ठीक है, तो ऑब्वियसली हेलाइड्स का जो प्रेफरेंस होता है वो लीस्ट होता है. ठीक है, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स में हेलाइड्स दे हैव गॉट द लीस्ट प्रेफरेंस. तो अल्कोहल मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप इज द हायर वन, हैज गेट्स द हायर प्रेफरेंस. सो हम कार्बन चेन को नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो बिकॉज दिस OH इज द हैज मोर प्रेफरेंस, सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5. यही लॉन्गेस्ट चेन है हमारी. ठीक है, तो ऐसा हमने, तो क्या हो गया कि ये जो है पेंटेन है. ठीक है, बिकॉज देयर आर 5 कार्बन एटम्स इन आवर पेरेंट चेन, इन आवर प्रिंसिपल चेन. तो दैट विल बी पेंटेन. ना पेंटेन पे फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, इसका मतलब पेंटेन 1 ऑल. ठीक है, अब धीरे धीरे सारे वी विल राइट ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर अटैच्ड. ठीक है, तो सबसे पहले क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसमें भी लिखते हैं. व्हेन देयर आर सो मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स और देयर आर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स इन अ कार्बन चेन इन अ कंपाउंड, we write these substituents in the order of the in the alphabetical order of their first letter. तो पहले क्लोरीन आता है कि पहले मिथाइल आता है, पहले C आता है, क्लोरीन का C. so that means first we will write chlorine, that is 4 chloro, क्योंकि फोर्थ कार्बन पे लगा हुआ है, so that is 4 chloro. 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, so we will write it as 2, 3 डाईमिथाइल.
and then we have this complete compound that is the main chain, pentane, one, all. ठीक है, so this was an alcohol with a halide group it is attached. ठीक है, now another question comes. दिस इज एन ईथर, क्योंकि क्योंकि जैसे हमने देखा कि एक O है और उसके दोनों तरफ पे अल्काइल ग्रुप लगे हैं या फिर एराइल ग्रुप लगे हैं, दैट इज एन ईथर. नाउ वी नीड टू राइट द आईयूपीएसी. वी आर राइटिंग हियर ओनली द आईयूपीएसी नेम्स. ठीक है, क्योंकि ये इतने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं कि इनके कॉमन नेम लिख पाना, आई मीन देयर it's a little complicated and they will not be asked because nowadays everybody and every textbook is more is preferring the IUPAC convention more. ठीक है, that is why. तो IUPAC के लिए what we need to do is in the case of ethers we first, सबसे पहले अगर ईथर का नाम आपको लिखना है तो सबसे पहले पेरेंट हाइड्रोकार्बन चूज करो. कौन सा है? दिस वन, बिकॉज इट हैज 3 कार्बन एटम्स. ठीक है, तो दिस इज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब प्रोपेन. ठीक है, अब आइसो नहीं लिख सकते, हमें दिख रहा है कि ये आइसो ग्रुप है. इफ यू टॉक अबाउट द कॉमन नेम, बट वी कांट राइट बिकॉज आईयूपीएसी में आइसो का कोई मतलब नहीं है. वी डोंट यूज द प्रीफिक्सेस आइसो, सेक एंड टर्ट इन द केस ऑफ आईयूपीएसी कन्वेंशन. ठीक है, सो दिस इज सिंपली प्रोपेन. हाँ, उस प्रोपेन में जो सेकंड नंबर कार्बन है उसमें हमारा ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे नेम करेंगे. तो क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा है? इथॉक्सी. दिस इज 2 कार्बन एटम ना, तो इथेन से क्या हो जाएगा? इथॉक्सी. तो सेकंड कार्बन पे लगा है, इस वजह से 2 इथॉक्सी प्रोपेन. सिंपल. ठीक. नाउ दिस इज अ बेंजीन रिंग एंड हियर वी हैव सब्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस OH विद द बेंजीन रिंग इट विल बी नोन एज फेनॉल. ठीक है, ये तो पता ही है कि जो प्रिंसिपल ग्रुप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फेनॉल. नाउ व्हेन यू विल नेम, क्योंकि देखो प्रिंसिपल जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है वो इस केस में क्या है? OH. ठीक है, OH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप. तो हम नेमिंग जो करेंगे वो OH से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो जो OH वाला कार्बन होगा दैट विल बी 1, ये वाला CH3 विल बी 2, और ऐसे करते करते 3, 4 एंड 5. ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन एटम है दैट इज 5. तो क्या नाम हो जाएगा? IUPAC, बिकॉज जो मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ कहाँ लगाए? 2 पे और 5 पोजीशन पे लगाए. ठीक है, तो 2,5 डाइमिथाइल एंड द मेन प्रिंसिपल कंपाउंड इज फिनॉल. ठीक. नाउ अगेन वी हैव एन ईथर ओवर हियर. ठीक है, अब हमें सबसे पहले जैसे ही ईथर देखना है सबसे पहले क्या करना है? नीड टू चूज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. यहाँ पे क्या है पेरेंट हाइड्रोकार्बन में? एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ 6 कार्बन है. तो दिस वन द बिगर कंपाउंड विल बी द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा? इट इज, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन, बट बिकॉज द alkoxy group it has a higher preference as compared to the nitro group. ठीक है, वो जो प्रेफरेंस की लिस्ट होती है ये हमेशा याद होनी चाहिए आप लोगों को. ठीक है, कि बिकॉज whenever you need to name using the IUPAC convention that you will be given complex compounds, complicated compounds in the exams. ठीक है, so where and those compounds they will contain number of functional groups, number of branches, number of methyl substituents or alkyl substituents. ठीक है, so there you may need that list. So because a nitro group it comes it has a lower preference, it comes in the list lower than the alkoxy group. That is why हम लोग alkoxy group से पहले शुरुआत करेंगे नेमिंग का. तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया. ठीक है, तो क्या हो गया? The name of the parent hydrocarbon will be 2-nitrocyclohexane. ठीक है, तो पहले पेरेंट हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं. इट इज साइक्लोहेक्सेन and 2-nitro. And then coming to the another compound or the another alkyl group, it is ethane. So the
This alkoxy word would be ethoxy. और कहाँ पे लगाए, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे लगाए, तो इट विल बी 1 ethoxy. 1 ethoxy 2 nitrocyclohexane. And obviously this E will be capital. In the IUPAC name, the first letter is always capital. ठीक है. And उसके बाद जितने letters होते हैं, they are always small. ठीक है. This you must remember. Okay, so this was the exercise. Now we are we have done a lot of examples and a lot of questions based on the nomenclature of alcohols, phenols, and ethers. So this was all for today. And on the next lecture, we will first understand the structure of the functional group. मतलब कि alcohol, phenol और ether का molecular level पे structure क्या होता है. And that there we will discuss about the bond lengths, the bond angle, the hybridization of the carbon and everything. ठीक है, regarding related with the structures. And then we will move on to the preparation of alcohols. Okay. So thank you, class.